Welcome all. Today we'll start with lesson 2, Kena Upanishad. So in this lesson, we will cover the section 1 and 2 of Kena Upanishad, whereas in lesson 3, we will complete section 3 and 4. Kena Upanishad derives its name from the first word Kena, that is by whom, and belongs to the Samaveda. It is also known as Talavakara, the name of the Brahmana of the Samaveda to which this Upanishad belongs. It has 4 sections, the first 2 in verse and the other 2 in prose. The metrical portion deals with the supreme unqualified Brahma, the absolute principle underlying the world of phenomena. The prose part deals with the supreme as God, that is Iswara, the knowledge of the absolute, Paravidya, which secures immediate liberation is possible only for those who are able to withdraw their thought from worldly objects and concentrate on the ultimate fact of the universe. The knowledge of Iswara or Aparavidya puts on the pathway to liberation. Kenopanishad. Kenopanishad ସାମବେଦର ତଲବକାର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଏହି ଉପନିଷଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ କେନ ଉପନିଷଦ। ତଲବକାର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏହା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 8 ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଉପାସନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିରୂପଣ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେହରେ ରହି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣି ନିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଅଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବହୁତ କଠିନ ଭାବରେ ମିଳୁଅଛି। ଏହି ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ଅଛି। ଇନଭୋକେସନ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଓମ୍ ଆପ୍ୟାୟନ୍ତୁ ମମାଙ୍ଗାନି ବାକ୍ ପ୍ରାଣଚକ୍ଷୁଃ ଶ୍ରୋତ୍ରୋ ମଥୋବଳମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्मो निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमात्मन, मोर समस्त अंग बाणी नेत्र एवं समस्त इंद्रिय बल और शक्तियुक्त हुंतु। उपनिषदर सर्वब्रह्ममय बाणी मोर बोधगम्य हो। मु ब्रह्म को केबे जेपरि अस्वीकार न करे, मते ब्रह्म केबे परित्याग न करंतु। ब्रह्मंकर अस्वीकार निराकरण केबे न हेउ। उपनिषदरे वर्णित समस्त सद्गुण मोठारे वास करू और आत्मारे आनंद परिपूर्ण होई रहू। मोर आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक त्रितापर शांति हेउ। May my limbs grow vigorous, my speech, breath, eye, and ear, as also my strength and all my senses. All this is the Brahma of the Upanishads. May I never discard Brahma. May the Brahma never discard me. May there be no discarding. May there be no discarding of me. Let those truths which are set forth in the Upanishads live in me, dedicated to the self. Om, peace, peace, peace. Section 1, Mantra 1. Who is the real agent in the individual? Mantra 1. केने सितं पतति प्रेसितं मनः केनः प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केने सितं वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो जुनक्ति। काहा द्वारा प्रेरित होई मन वस्तुमानक उपरे आलोकपात करे, काहा द्वारा अदिष्ट होई प्राण जीवशक्ति संचालन करे, काहा द्वारा प्रेरित होई वाक्य निश्रुत हुए, चक्षु और कर्ण काहा द्वारा प्रेरित होई कार्य करंती। By whom willed and directed does the mind light on its objects? By whom commanded does life the first move? At whose will do people utter this speech? And what God in it that prompts the
eye and the ear. Section 1, Mantra 2. The all conditioning yet inscrutable Brahma is the agent. Srotrasya srotang manoso mano jadvacho habachang sa upranasya prana चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति से कर्णर कर्ण मनर मन वचनर वचन प्राणर प्राण एवं चक्षुर चक्षु अटंती विज्ञ लोक ए जगत को दूरे दे इंद्रिय मानकर आत्मज्ञान परित्याग करी अमर हुवन्ति बिकॉज इट इज दैट which is the ear of the ear, mind of the mind, the speech, indeed, of the speech, the breath of the breath, the eye of the eye, the wise giving up wrong notions of their self sufficiency and departing from the world become immortal. Explanation of Mantra 1 and 2. The questions put in the first verse by the pupil implies that the passing things of experience are not all and they depend on a permanent reality. The necessity of a ground for the existence of finite beings is assumed here. The second verse answers the question by saying that there is an eternal reality behind the mind, life, and the senses. Brahma is not an object subject to mind, speech, and the senses. Section 1, Mantra 3. Mantra 3. Mantra 3. न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथै तदनुशिष्यात् चक्षु सेटाकू जाइपारे नहीं वाक्य ताहा प्रकाश करिपारे नहीं मन ताहाकू जानिपारे नहीं तेणु आम पक्षे अन्यकू ताहा जणाइबा कष्टसाध्य. There the eyes goes not, speech goes not, nor the mind, we know not, we understand not how one can teach this. Knowledge of a thing arises through the senses or the mind, and since Brahma is not reached by either of these, we do not know of what nature it is. Therefore, how can we explain that to a disciple? Section 1, Mantra 4. Mantra 4. अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि इति सुश्रुमो पूर्वे सांग ये नस्तत् व्याचचक्षिरे. पुणी ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଉଦ୍ଧରେ ଏହା ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ବୁଝାଇଥିଲେ. Other indeed is it than the known, and also it is above the unknown. Thus have we heard from the ancients who have explained it to us. It is above the known and the unknown, but it is not unknowable. It is not beyond our apprehension. The writer suggests that the teaching has been transmitted by tradition. Section 1, Mantra 5. Mantra 5. जद वाचानुविदितं जेन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदम उपासते. वाक्य जहाँ को प्रकाश करिपारे नहीं और जहाँ वाक्य को प्रकाश करे ताहा ही ब्रह्म. जगत रे जहाँ को उपासना करा जाए से नुहंती. That which is not expressed through speech, but that by which speech is expressed, that verily know thou is Brahman, not what people here adore. The author lays stress on the distinction between the absolute Brahma, who is one with the deepest self in us, and Ishvara, who is the object of worship. The simple, unreflective mind seeks God, who is above and not within. Section 1, Mantra 6. Mantra 6. जन्नसा न महुते जेनाहु मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं गदीदम उपासते. ଯାହାକୁ ମନ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ଅଥଚ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନ ହୋଇଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ. ଆମେ ଯାହାକୁ ଉପାସନା କରୁ ସେ ନୁହନ୍ତି. That which is not thought by the mind, but by which they say the mind is thought, thinks that verily know thou is Brahma and not what people here adore. Section 1, Mantra 7. Mantra 7. जचक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुर्षि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते. जहाँ आखि देखिपारे नहीं, आखि द्वारा देखा जाए नहीं, अथच आखि माने जहाँ द्वारा देखती ताहाको तुमे ब्रह्म बोली जान. आमे जहाँ को उपासना करू से नुहे. That which is not seen by the eye, but by which the eyes are seen, that verily know thou is Brahma and not what people here adore.
सेक्शन 1 मंत्र 8 मंत्र 8 यच्छ्रोत्रेण न शृणोति जेन श्रोतमिद्रसुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जदिदम उपासते। जहाँ कर्ण द्वारा शुणा जाए नहीं अर्थात कर्ण जहाँ को शुणी पारे नहीं अथच कर्ण जार शक्ति द्वारा शुणा को समर्थ होता है ताहाको तुमे ब्रह्म बोली जान आमे जहाँ को उपासना करूँ से नुहे। दैट व्हिच इज नॉट हर्ड बाय द ईयर बट बाय व्हिच द ईयर्स हियर दैट वेरिली नो दाउ इज ब्रह्म एंड नॉट व्हाट पीपल हियर adore। सेक्शन 1 मंत्र 9 मंत्र 9 जत प्राणेन न प्राणिति जेन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जदिदम उपासते। जे प्राण द्वारा श्वासक्रिया संचार करे नहीं और जहाँ द्वारा श्वासक्रिया संचालित तो हुए ताहाको तुमे ब्रह्म बोली जान आमे जहाँ को उपासना करूँ से नुहे। दैट व्हिच इज नॉट ब्रीथ्ड by life, but by which life breathes, that verily know thou is Brahma and not what people here adore। Section 2 The paradox of inscrutability of Brahma द्वितीय अध्याय मंत्र 1 मंत्र 1 यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं जदस्य देवेस्वथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम्। एठार ऋषि तांकर शिष्य मान कहते तुम्हें जदि भावुच वर्तमान सुधा तुम्हें जहाँ जाच ता संपूर्ण ज्ञान बोली तेरे ताहा ठीक नुहे। ब्रह्मंकर और देवता मानकर स्वरूप तुम्हें जहाँ जाच ताकू निश्चित करी मीमांसा करने को हेब। इफ यू थिंक यू हैव अंडरस्टूड ब्रह्म वेल यू नो इट बट स्लाइटली वेदर इट रेफर्स टू यू और द गॉड्स सो देन इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यू द पीपल इवन दो आई थिंक इट इज नोन। सेक्शन 2 मंत्र 2 मंत्र 2 नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च जो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। भल भाव जाने बोली कहि परिबि नहीं मु किछि जाने नहीं बोली मध्य कहि परिबि नहीं मु जाने मध्य आम्भ मान मध्य जे जाने तथा न जाने से भी जाने। आई डू नॉट थिंक दैट आई नो इट वेल नॉर डू आई थिंक दैट आई डू नॉट नो इट वेल। ही हु amongst us knows it and he too does not know that he does not know। मंत्र 3 सेक्शन 2 मंत्र 3 मंत्र 3 जस्या मतंग तस्य मतंग मतंग जस्य न वेद सह अभिज्ञातं विजानतां विज्ञातम विजानताम। जे जानिछि बोली से अज्ञ बोली जाने तेणु किछि जानी नहीं बोली कुहे जे जानिछि बोली कुहे से किछि जानी नहीं। जे आत्मदत्त सह साक्षात्कार करंती तांको पई आत्मा अगोचर अटे से साक्षात्कार करि नाहंती से सब जानिछथि बोली कहंती। To whosoever it is not known, to him it is known. To whosoever it is known, he does not know. It is not understood by those who understand it. It is understood by those who do not understand। Section 2, Mantra 4 The value of the knowledge of the Brahma। मंत्र 4 प्रतिबोध विदितं मतंग अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते विद्यं विद्यया विन्दते मृतम। भावनार प्रत्येक रूपांतर द्वारा जे आत्मा स्वरूप को अनुभव करे से अमृतत्व प्राप्त हुए यह स्थिर निश्चित अटे। आत्मा द्वारा से शक्ति प्राप्त हुए और ज्ञान द्वारा अमृतत्व प्राप्त हुए। व्हेन इट इज नोन थ्रू एवरी स्टेट ऑफ cognition it is rightly known for by such knowledge one attains life eternal। through one's own self one gains power and through wisdom one gains immortality। सेक्शन 2 मंत्र 5 मंत्र 5 इह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्न हति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकदमृता भवन्ति। यदि केही एही जगत रे ब्रह्म को जानी पारे ताहाले परिपूर्ण सत्य प्राप्त हुए। यदि एठारे जानी न पारे तेबे घोर क्षति होई थाए। एही जगत रे परम ब्रह्म परम परिपूर्ण सत्य प्राप्ति परे एही लोक रे जे अमरत्व प्राप्त होंती। इफ हियर ए पर्सन नोज इट देन देयर इज ट्रुथ। If here he knows it not, there is great loss। Hence, seeing or seeking the real in all beings, wise men become immortal on departing from the world। Explanation of Mantra 5 मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ। मनुष्य जन्म नेबा परे गर्भ जंत्रणा मन पकाई नहीं विचारहीन दायित्वहीन भाव में समय अतिबाहित करे। उपनिषद कहे यही जन्म को संसार कार्य विनियोग कर व्यर्थ होगा दियो नहीं। आत्मिक शक्ति की परमाणु शक्ति अधिक जहाँ मनुष्य जाना उचित। जन्म एक बंधन मुक्ति दुई प्रकार विदेह मुक्ति जहाँ मृत्यु पर आसे अर्थात जन्मर शरीर नष्ट हो जीवन को आउ एक शरीर धारण करने पड़े ना। जीवन मुक्ति जब जड़े साधक यही जीवन काल में सत्यर उपलब्धि करे। समरी ऑफ सेक्शन 2 The Supreme is not an object of ordinary knowledge
but of intuitive realization. If we think that we know Brahma and we can describe him as an object perceived in nature or as the cause inferred from the nature, we do not in reality know him. Brahma cannot be comprehended as an object of knowledge. He can be realized as subject in all knowledge. True knowledge is intuitive experience. The wise man sees the same Brahma in every creature. If here on earth, in this physical body, we arrive at our true existence and are no longer bound down to the process, to the becoming, we are saved. If we do not find the truth, our loss is great. For we then are lost in the life of mind and body and do not rise above it to our supernatural existence. So this completes section 2 and these are the references. In the next lesson, we will go to section 3 and 4 of Kena Upanishad. Thank you for listening.